Bismillahir Rahmanir Rahim. In this lecture, I will discuss unit number 7, choice of career. Choice means selection. Career means profession. पेशे का इंतखाब. ये एक लेटर टाइप है. एक लेटर के रिस्पॉन्स में ये लेटर लिखा जा रहा है. तो यहाँ पर राइटर ने अपना एड्रेस मेंशन किया है. अब लेटर की फॉर्मेट किस तरह है वो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद इस लेक्चर का जो ग्रामर, इस यूनिट का जो ग्रामर पोर्शन है उसमें इंक्लूडेड है, तो वहाँ पर फिर उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह फॉर्मेट होगा बोर्ड में जो लेटर आता है फर्स्ट ईयर में. Dear Kashif, in your letter you have asked me for the selection of career for you. I however think that this is the decision you should make on your own, because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life. It is about so much more than deciding what you will do to make a living. To start with, think about the amount of time we spend at work. We are on the job approximately means more and less तकरीबन 25% of your year over our lifetimes. This comes to roughly approximately दोनों synonyms है. 11 years out of the 35 years most of us spend working from the beginning of our career until retirement. The importance of selecting means choosing a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers without giving it much thought, most of us are not. Many people don't put effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons. Maybe they choose careers that seem secure or pay well, then they end up unhappy. The best way to make sure that it doesn't happen to you is to make a well thought out decision. I would like to give some pragmatic means practical suggestions that will help you in the selection of career. राइटर से एक बंदे ने पूछा था कि उसको गाइड करे, उसको एडवाइस दे कि किस तरह वो करियर को सेलेक्ट करे. तो उसके जवाब में राइटर ये लिख रहा है और उसको बता रहा है कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जो आपको ख़ुद करना है, क्योंकि आपकी लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी पोजीशन, आपकी करंट कंडीशन, आपकी सिचुएशंस, आपकी सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती है कि आपके लिए कौन सा पेशा सूटेबल है. फिर राइटर बहुत सारे पॉइंट बता रहे हैं कि कुछ लोग गलत रीज़न के लिए एक करियर का इंतखाब करते हैं गलत वजह से, तो फिर उनका नुकसान होता है. हाँ, कुछ लोग लकी भी होते हैं, सही करियर को सही वक्त पे सेलेक्ट करते हैं. बहरहाल वो कहता है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको सजेशंस दे रहा हूँ. वो क्या है आगे वो डिस्कस हो रही है. द फर्स्ट स्टेप इन योर चॉइस ऑफ करियर इज सेल्फ असेसमेंट एंड रिट्रोस्पेक्शन मीन द व्यू और द स्टडी ऑफ द पास्ट. पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को जज करें, ज़ाती जायज़ा लें और माजी का जायज़ा, पास्ट का जायज़ा भी ले लें. व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ. डिटर्मिनिंग मीन्स find out what your skills are, what you enjoy doing, and what is important to you in your work and life is part of the process of self assessment. आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट में आती है. विच इज़ फंडामेंटल मीन्स बेसिक to career development. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. Your hobbies and leisurely pursuits can give, pursuit mean something that you chase, give you great insight means a deep understanding, inside story into future career paths.
مزید رائٹر بتا رہا ہے کہ آپ کی لیجر ایکٹیویٹیز، فری ٹائم ایکٹیویٹیز، آپ کی ہابیز کیا ہے، کیا کرنا آپ پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہے، ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے لیے کون سا کیریئر سوٹیبل ہے. It should however be kept in mind that nothing is constant except change. Everybody changes, as do our likes and dislikes. Sometimes something we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. Always take time. Reflect means think deeply on the things in your life that you feel more strongly about. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. Reflect means think deeply on your current path. If your job and career fall under like, you know that you are still on the right path. Take time to understand your interest in the motives. Motives mean triggers, reasons, factors that drive your sense of success and happiness. رائٹر کے کچھ پوائنٹ ذہن میں یاد رکھیں. ان میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی، صرف چینج کانسٹنٹ، چینج مسلسل طور پر اکر ہوتی ہے. ہر بندہ چینج ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لائکس ڈس لائکس بھی چینج ہوتے ہیں. کوئی چیز جو ہم پہلے پسند کرتے تھے اب ہم ناپسند کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیپ تھنکنگ کریں اور وہ فکر کریں کہ آپ کی لائکس کیا ہے، ڈس لائکس کیا ہے، خواہشات کا کیا ہے آپ کی. اسی طرح آپ اپنے کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد آپ ٹائم نکال کے اپنے ان فیکٹرز کو کنسیڈر کریں جو آپ کو سکسیزفل اور آپ کو ہیپی بنا سکتی ہے. After you have identified your interest, search for occupations. For example, if you like children or reading, explore a career in early education or library sciences. Careers such as day workers or pediatric nurse. Pediatric means جو بچوں کی ابتدائی تعلیم اور ان کی صحت کی ریلیٹڈ پیشہ ہے، آپ اس کو سرچ کریں. ایلیمنٹری منٹیسری ٹیچر آر آلسو آپشن دیٹ الاؤ یو ٹو ورک وتھ چلڈرن. اگر آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں انٹرسٹ لیتے ہیں. سملرلی if you take initiative mean first steps in helping others and assist people. Assist mean help. In their critical mean difficult, tough. State you can opt for means select, choose, medical profession and so on. اگر آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو آپ کے لیے ارلی ایجوکیشن یا پیڈیاٹرک نرس ایلیمنٹری یہ والی جاب سوٹیبل ہے. اسی طرح اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں انیشیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے میڈیکل پروفیشن صحیح ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو فوکس آن اے اسپیسیفک career based on your interests, identify the education, knowledge and skills it requires. Some careers may be studied with a high school diploma, others may require a 2-year or 4-year degree. Some fields require certification for your chosen path. For example, if you choose a career in project management, you may find that certain positions require a certification. If you want to be engineer, you will have to plan your career accordingly. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy mean numbers, better to opt for management, accounting or finance. اب رائٹر بتا رہا ہے کہ آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کس فیلڈ میں آپ کی انٹرسٹ زیادہ ہے تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس فیلڈ کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے، کون سے اسکل، کون سی نالج، کون سی ڈگری کی ضرورت ہے. کچھ فیلڈز، کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف اور صرف ڈگری یا سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ایکسٹرا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. تو انٹرسٹ کے بعد پھر آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ اس فیلڈ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اسکلس کی، ڈگریز کی وغیرہ کی. It is worth noting that you should consider factors beyond personal preferences mean ترجیحات.
What is the current demand for the field that you have chosen? If the demand is low or entry is difficult, are you comfortable with risk? What qualifications are required to enter the field? Will it require additional education or training? How will selecting this option affect you and others in your life? Gather mean इकट्ठा करना. Advice from friends, colleagues and family members, and also interact with those who are already in this field. Consider potential. Potential mean hidden, possible. Outcomes mean नताइज. And barriers mean hurdles, रुकावटें for each of your final options. फिर राइटर कहता है कि आप ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के कंसिडर करिए उस फील्ड को कि उसकी डिमांड क्या है, उसमें एंट्री मुश्किल है, आसान है. अगर मुश्किल है जॉब और फिर कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं. फिर ये देखिए कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एडिशनल ट्रेनिंग वगैरह उसके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं. उस फील्ड में ऑलरेडी जो है उनसे मशवरा करें और फिर देख लें कि जो आपने सेलेक्ट किया है इसकी फ्यूचर नताइज क्या हो सकते हैं और आपके रास्ते में रुकावटें क्या क्या आ सकती है. If you are pragmatic means realistic and practical in your choice of career, then create your career action plan. It is important to be realistic about expectations and timelines. Expectation mean तवक्कुआत, timeline mean duration. Daydreaming or expectations and setting unrealistic goals में detract, रास्ते से हटाना, गुमराह करना. You from your dream job, write down specific action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized. Organized mean well arranged. Check them off as you complete them, but feel free to amend mean change, तरमीम करना. Your career action plan is needed. Your goals and priorities may change and that's perfectly okay. अगर आप हकीकत पसंद है, अमली तौर पर आप अपने फील्ड को परसीव करना चाहते हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक अपने लिए करियर एक्शन प्लान बनाए. फिर आप उन चीज़ों के बारे में जो आपकी तवक्कुआत है और उन तवक्कुआत की पूरा होने के लिए जो आपने ड्यूरेशन रखी हुई है उसके बारे में आपको रियलिस्टिक होना चाहिए. ये नहीं कि आप दिन में ख्वाब देखें और बड़े बड़े तवक्कुआत रखें, ऐसे गोल रखिए जो पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि ये आपको गुमराह कर सकती है. फिर इसके अलावा आप अपने आप को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखिए, वेल अरेंज रखिए, मुनज़्ज़म रखिए, ताकि आपकी सारी चीज़ें आपकी एक पास एक प्लान की शक्ल में मौजूद हो. आपकी सारे स्टेप्स, प्रोसीजर वगैरह उनको देखते जाए. जो जो स्टेप आप कंप्लीट करते हैं बवक्त ज़रूरत अगर उसमें चेंज की ज़रूरत है तो वो भी करते जाए, क्योंकि गोल्स जो आपके हैं, आपके जो फ्यूचर एम्स है, प्लान्स है और आपकी तरजीहात है वो चेंज होते रहते हैं. और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि चेंजेस उसने पहले भी कहा कि कांस्टेंट चीज़ है और ये होती रहती है. It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon means guideline. एक रहनुमा के तौर पर ये सजेशंस आपके काम आएंगे. If you have any queries or confusion regarding the choice of career, do not hesitate to ask. I wish you best of luck for your future career. तो सिंपल सी पॉइंट्स उसने सजेशंस दिए कि किस तरह आपने एक फील्ड को सेलेक्ट करने से पहले उसमें सबसे पहले देखना है कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ पर है. फिर जब आपने ये डिसाइड किया, फिर आप देखिए कि उस फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है और फिर आप ये देख लें कि उस फील्ड की स्टेटस क्या है.